Hello, good evening, and a very warm welcome to all the POSPs who have joined us in this particular session today. This is Husaini Kanchwala. So, you might have interacted with me earlier. Many a times we would have talked on investments or mutual funds. This is my first interaction with you as head of insurance business. So, look forward to doing a lot of activities in terms of insurance where we can grow our business together with you, where we can help you grow your business together. So there are a lot of interesting products on the investment side, on the insurance side rather, where we can do a lot of fantastic work. Many of you have been working in the insurance field for past several years and probably would be much more knowledgeable than me. So what I'll do is in the agenda for today, so I'll share some of business ideas with you, and I'm having along with me my colleague Manoj. So can we have Manoj on screen, please? Right. So Manoj Patil from Mumbai is also there with us, and he will take you through some products, some very interesting products. Right. So this is what the agenda which we have for today, and so can we have the presentation on screen, please? Yes, sir. Right. So what are we going to talk to you about today? If I take you to the agenda of the session today, so I'm going to talk about certain business ideas, right, and product updates. And then Manoj is going to talk about these annuity products and revised IRR and certain IT updates which we have for you, right? So if I talk about annuity, annuity is a very, very, very interesting product. हम सभी लोग जो इस इंडस्ट्री में काम करते हैं, आप में से काफ़ी लोग इन्वेस्टमेंट्स में भी काम करते हैं, इंश्योरेंस में भी काम करते हैं, right? So annuities is a very, very interesting product. So I have to just give you an overview that where people in India save their money or rather invest their money. So the total wealth which we have in India is around $11 trillion as of March 22. $11 trillion is the asset which is there in India, right? So $1 trillion is equivalent to 80 lakh crores. So $11 trillion is the overall wealth which we have in India. So out of our total wealth, 65% of the wealth is in physical assets and 35% wealth is in financial assets. And out of that 35 rupees which is there in financial assets, 5 rupees are in equities and 30 rupees are outside equities. So 30 rupees are in debt and 5 rupees are in equity. So there is large amount of money which is lying uh, outside equities where there is huge scope of investment. So can we move on to the next slide, please? Right. So there we have this amazing product of annuities. Now, what is annuities all about? Right. So if I have to give a background about annuities, annuities is something which is useful for any investor post retirement. राइट और अगर मैं थोड़े रिटायरमेंट के नंबर्स की बात करूं तो आने वाले 10 सालों के अंदर में या पिछले 10 सालों में इंडिया में लगभग 3.5 करोड़ एल्डरली का पॉपुलेशन बढ़ गया एल्डरली मतलब ऐसे लोग जो 60 साल या उससे ज्यादा की उम्र के हैं तो 3.5 करोड़ से वो पॉपुलेशन पिछले 10 साल में बढ़ी है और आने वाले 10 सालों में वो नंबर 5.5 करोड़ से और बढ़ने वाला है right? So there is large number of people who have retired in the last 10 years and there is large number of people who are about to retire in the next 10 years. तो जो लोग रिटायर हो रहे होते हैं तो रिटायरमेंट के बारे में आप सभी लोग जानते हैं रिटायर होने के बाद लोग काम करना बंद कर देते हैं राइट और कुछ ना कुछ जरिए से उन्हें दूसरी इनकम की जरूरत पड़ती है जिससे वो अपना घर खर्च चला सके अपना मेडिकल एक्सपेंस चला सके अपनी वाइफ का या अपने हस्बैंड के खर्चे चला सके राइट तो यही जो प्रोडक्ट है यही सेगमेंट है ये बहुत बड़ा सेगमेंट है और आने वाले 10 सालों में ये सेगमेंट और ज्यादा बड़ा इंडिया में होने वाला है राइट तो कैन यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज राइट अभी इसी इसी
पोजिशनिंग में या इसी सेगमेंट के लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है जिसका नाम है एन्युटी। एन्युटी का मतलब क्या होता है सर कि एन्युटी मींस मंथली और एनुअल गारंटीड इनकम। मतलब आपने एक एक्स अमाउंट ऑफ लमसम मनी पे कर दिया इंश्योरेंस कंपनी को, एंड दैट इंश्योरेंस कंपनी pays you a fixed amount, right, which is a guaranteed amount, which is not variable, which is not dependent on stock markets, right? So that fixed amount comes to the person till the time he is alive, or up to a certain number of years. So you can have different types of plans. You can have a either a fixed term annuity which is for 15 years, 20 years, or you can have an annuity which is whole life annuity. कि जब तक आप जिंदा रहेंगे तब तक आपको वो पैसा मिलता रहेगा। तो somebody has is retired at the age of 60 years, he dies at the age of 95, तो 35 years तक उनको एन्युटी मिलती रहेगी। और यहाँ पे काफी सारे फीचर्स भी हैं, जैसे एक फीचर यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग है जिसको बोलते हैं जॉइंट लाइफ फीचर। जॉइंट लाइफ फीचर में क्या होता है कि आप यू हैव टेकन दिस पॉलिसी along with your wife, so in case of your death your wife continues to get that income. So many people are worried in the old age that what will happen to my wife or my husband when I am gone. So annuity basically solves that problem also. To add to it, there is another interesting feature here that आपने एक एक्स अमाउंट पे किया, आपको बरसों तक उससे इनकम मिली जिससे आपका गुजारा हुआ। नाउ एट द टाइम in future when you die and your wife also die, if you have taken a joint life policy, so the insurance company will return the entire premium paid by you, right? तो आपने अगर आज मान लीजिए 1 करोड़ रुपया डाला है तो वो भविष्य में आपको 1 करोड़ रुपया भी वापस मिल जाता है। बीच में आपको इतने साल तो उसके ऊपर से मंथली इनकम भी मिला और एंड में आपको वो पैसा भी आपके लीगल हायर्स को वापस मिल जाता है, राइट? सो एन्युटी प्लान्स जनरली डोंट प्रोवाइड एन इंश्योरेंस कवर, बट दे आर very very interesting products because they give the investor comfort of a regular income, and comfort of a regular income when the person has stopped working. So in your post retirement age, right, the investor continues to get a regular income, and the good part is that all the premiums which are being paid for annuities are deductible under section 80C, right? सो अभी दो तरह की एन्युटीज होती है अलग अलग, एक होती है इमीडिएट एन्युटी और दूसरी होती है डिफर्ड एन्युटी, right? थोड़ा साधारण लैंग्वेज में इफ आई एक्सप्लेन टू यू व्हाट इज एन इमीडिएट एन्युटी इज दैट आई deposit a particular amount or I pay a particular premium today. Suppose I deposit say 20 lakh rupees and or 25 lakh rupees and I start getting annuity immediately from next year onwards. That is called immediate annuities. Then there are deferred annuities. What is deferred annuity is that I deposit the money over a certain period of time, then I wait for certain period of time, and उसके बाद जाके मेरा monthly or annual income चालू होता है, right? So supposedly if somebody is 45 years old, he pays for 5 years and then he waits for another 5 years. So totally 10 years he is waiting, and then after that he is getting that income. So in the current scheme of things, for POSP channel, only immediate annuities are available, right? So deferred annuities are not available, right? Meaning by that, if you are reaching out to an investor who has retired or who is about to retire, और आप उसका corpus लेके आते हैं, so that person can get an annuity income immediately from next month or next year, right? So an important term to know here is ROP, which is return of purchase price, which is return of all the amounts which you have paid while buying the annuities, right? Now why one should buy annuities? Okay, so some very interesting selling points for annuities are that number one, there is no underwriting in annuities, there are no medicals in annuities, right? So generally your old age investors, they will not get any insurance policies because of underwriting or medicals. Annuities can cover a normal pre-existing disease customers. Policy issuance is very very fast, and the most interesting part is that when you are going to work for annuities, the ticket size is pretty big, right? Because retire होने के बाद लोगों के पास बड़ा amount आता है, which can be 10 lakh, 20 lakh, 30 lakh, 50 lakh, 1 crore, whatever, right? So ticket size is very large, and the best part is that there is no limit for ticket size for you as a POSP. So in many products, there is a limitation for POSP channel, while for annuities, there is absolutely no limitation. So if you reach out to an investor
और वो इन्वेस्टर को 5 करोड़ रुपया लगाना है, तो आप उससे 5 करोड़ रुपए का भी एन्युटी ले सकते हैं, राइट? मेनी अ टाइम्स इन्वेस्टर्स are confused, or they also invest into equities, right? They invest through the SWP route, right? But large number of investors are still there who do not like volatility in their income, right? So annuity is a fantastic product for people who do not like market volatility. There are large number of investors in India who have never invested in equity in their entire life. तो जिन लोगों ने आज तक कभी इक्विटी में पैसा नहीं लगाया है, वो आदमी को अगर हम 60 की एज में कोई भी उसको बोलता है कि अभी आप इक्विटी में पैसा लगाइए, मेनी पीपल डू नॉट फील कंफर्टेबल अबाउट इट. So that is a substantially huge market where we can reach out to such people and give them a solution which can take care of their entire remaining life, where he can be rest assured कि उसको कभी भी पैसा खत्म नहीं होगा, जब तक वो जिंदा है उनको वो पैसा मिलता रहेगा. And to add to the cherry to the cake, that because the ticket size is large, automatically earnings for you as POSP are also pretty attractive, right? So though the earning percentages are lower, but because the ticket size is high, you get a fairly decent earning, right? मैं यहाँ पे एक सैम्पल, हमने एक एग्जाम्पल लिया है कुछ प्रोडक्ट्स का. मैं प्रोडक्ट के डिटेल में नहीं जाऊंगा ज़्यादा, वो मनोज विल कवर दीज प्रोडक्ट्स in the forthcoming slides. But what I can tell you that mota moti, if somebody is putting in 25 lakh rupees of premium for an immediate annuity, he gets an income. There are different products which are available here. So he gets an annual income. If you go for an annual option, you get a 1.6 to 1.7 lakh kind of an annual income. Or if you go for a monthly income, you get a 12,000 on a rough range, around 12,000 sort of a monthly income. So the range of your yield is around 6.5 to 6.7 odd percent, and that is fixed for the rest of your life, irrespective of wherever the interest rates go in future, right? So I think it's a very fantastic tool. If somebody supposedly retires with 1 crore kind of a sum of money, so अगर if आपने किसी को 1 करोड़ रुपए का एन्युटी बेचा, तो 1 करोड़ पे आपके इन्वेस्टर को 50,000 रुपया मिलेगा जब तक वो जीवित है. वो ये तीनों चारों जो ऑप्शन हमने स्क्रीन पे लिए हैं, तो चारों में से जो चाहे वो ऑप्शन ले सकते हैं. तो 50 to 52,000 rupees is going to be his monthly income till the time he is alive, right? So it's a very simple product. There is not much of a gyan, or there is not much of a complication in this particular product. And most of you who are starting your business, right, you can reach out to a lot of investors who have not had any past experience of equity, right, who are not comfortable with equity, and you can reach out to them. There are going to be certain investors who will say that, boss, I thank you very much, I am not interested in annuities, I am happy investing money in equity. That is fair enough, right? Many people will be happy with equity portion, right? Probably they might make higher money on the equity side also. But there is a large section in our society where people want a fixed guaranteed income. They do not like ups and downs. They do not want reduction in their portfolios. There are a lot of retired people who, when they retire, they say कि भाई अभी मेरे पास इतना ही रुपया है, और अभी आगे की जो मुझे जिंदगी चलानी है वो इसी रुपए से चलानी है, राइट? और ये पैसे में अगर कुछ भी ऊपर नीचे हो गया, देन आई एम हैविंग नो ऑप्शन. So I think it's a very interesting product, and there are large number of your existing clients whom you can pitch the annuity as a product. Can you move on to the next slide, please? Right. So just what I said, annuities give not you but your clients a very stable income. वो पूरा जिंदगी भर के लिए उसको आता है, right? And it depends on whatever price you have chosen. So as a distributor or as a POSP, whenever you talk to your clients, you should always showcase this product, and especially the clients who are in the age bracket of 50 to 60. That is a big market and big opportunity for us, right? Where we can reach out to such investors, and it's a win-win product, right? At the end of the day, we are solving a very important problem which is there in our country,
right? Or which is going to arise because a lot of people are going to retire. तो अगर अगले 10 साल में 5.5 करोड़ लोग रिटायर होने वाले हैं, so basically we are going to have 50 to 60 lakh people retiring every month. And what we look forward to is not reaching out to 50 lakh people, but at least if you can reach out to 2 to 3 clients every month and who can put in a corpus of 20, 30, 40 lakh rupees, you can solve their problem also and you can create a decent earning for yourself also. Right. So that's all about annuities from my side. Right. I'll now invite Manoj to please come forward and share some details about some interesting products which we have shortlisted for you, which you can go and talk to your customers about. Over to you, Manoj. थैंक यू वेरी मच हुसैनी सर. काफ़ी अच्छा आपने इंसाइट दे दिया एज फार एज एन्युटी प्लान्स आर कंसर्न. सो गोइंग अहेड वी विल सी व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल. मतलब प्लान्स के हमने रिटर्न्स तो आपको बता दिए, लेकिन जो प्लान्स अपने पास अवेलेबल है एज फार एज पीओएसपी प्लेटफॉर्म इज कंसर्न, सो वी विल हैव अ brief refresher on those plans. So starting with ICICI Prudential Life Insurance Company, okay, it is having a plan called as Saral Pension. Okay, so what are the key features of this plan? So this plan also, that is Saral Pension, offers lifelong guaranteed income for a stress-free retirement life. Okay, option to opt for single and joint life with रिटर्न ऑफ परचेस प्राइस. यानी रिटर्न ऑफ परचेस प्राइस आपके पास ऑप्शन है. ओके, आपको रिटर्न ऑफ परचेस प्राइस चाहिए तो आप ले सकते हैं. ओके, अगर आपको रिटर्न ऑफ परचेस प्राइस नहीं चाहिए तो आपके पास वो भी ऑप्शन अवेलेबल है. ओके, added advantage with this plan, higher purchase price benefit means if your investment amount is more, okay, insurer will give you slightly higher returns. Okay, also there is a benefit of NPS. So NPS में जो लोग इन्वेस्टेड है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एज 60, ओके, दे हैव टू बाय immediate annuity plan. Okay, so you can offer IPRU Saral Pension. So IPRU is offering certain extra returns for such NPS account holders. Okay, another USP, loans can be availed against this immediate annuity plans. ओके, सो whom should we sell? हमें ये प्लान किसे बेचना है? सो आइडियली फॉर एनी इंडिविजुअल, ओके, जो अपने रिटायरमेंट के पास है. सो एनी पर्सन हु इज नियरिंग हिज रिटायरमेंट. ओके, सेकंड इज द पर्सन हु हैज ऑलरेडी रिटायर्ड एंड सीकिंग टू इन्वेस्ट इन पेंशन प्लान. ओके, सो काफ़ी सारे ऐसे क्लाइंट्स मार्केट में है जो रिटायरमेंट इनका हो चुका है, उनके पास रिटायरमेंट का कॉर्पस भी उनके एम्प्लॉयर के पास से आया हुआ है, बट दे आर कंफ्यूज कि इसको कहाँ पार्क करना है. सो ये क्लाइंट्स के पास हम जा सकते हैं. ओके, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, any investor having an NPS corpus, okay, he can also invest in such plan. उनको भी एन्युटी की जरूरत है, so NPS का corpus they can transfer it to IPRU Saral Pension Plan and they can get the annuity benefit. ओके, सो जैसे मैंने अर्लियर कहा था कि एनपीएस का यहाँ पर एक एडेड एडवांटेज आपको दे रही है आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल. ओके, सो एडिशनल 1% ऑफ द पॉलिसीज परचेज यूजिंग प्रोसीड्स आउट ऑफ एनपीएस. यानी आपको जो भी रिटर्न्स मिल रहे हैं उसमें 1% बढ़ोतरी आपको मिलेगी अगर आपका इन्वेस्टर जो है एनपीएस का कॉर्पस यहाँ पर शिफ्ट करता है. ओके, ऑप्शन टू टेक प्लान फॉर अ सिंगल लाइफ और जॉइंट लाइफ. ओके, सो सिंगल लाइफ में तो हमने काफी सारे डिस्कशन इस पे ऑलरेडी कर चुके हैं. ओके, नाउ जॉइंट लाइफ में, तो जॉइंट लाइफ में हस्बैंड वाइफ बोथ कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस पॉलिसी. ओके, तो इस हाउ डज दिस वर्क्स, मतलब अगर जॉइंट लाइफ में हमने पॉलिसी ली हुई है, ओके, सो फर्स्ट होल्डर विल स्टार्ट गेटिंग द एन्युटी. ओके, during this annuity period, if any of the member dies, okay, then the annuity is continued to pay to the second holder. Okay, so single life annuity with return of purchase price option यहाँ पर available है. Then joint life annuity with return of purchase option is also available in this plan. That is IPRU Saral Pension. Okay, another USP, high purchase price benefit. Okay, so you can see if my investment is more than say 3 lakhs, so I will get a standard rate. If the amount varies from 3 to 5 lakhs, then I will get additional 0.85%. And if my investment amount is more than 10 lakhs, okay, then I would get 5% extra annuity. Okay, the more you pay, the more you get.
So we have taken one sample illustration over here. Okay. Uh, Let us say a person enters into this plan. Okay. Saral pension. He invests 25 lakh rupees. So he will get 1,67,781 rupees continuous for his life. Okay. And once in future, if the investor dies, then his nominee will get the total return of purchase price, means the amount which he had invested at the time of buying this annuity plan. Okay, now this is an example, yeah, illustration of joint life. So you can see, uh, person has taken this policy at age of 60. So the primary annuitant will receive 1,67,781 rupees against the investment of 25 lakh rupees. Okay, then on demise of primary annuitant, okay, the annuity continues to be paid to the spouse. And when spouse dies, okay, that is second annuitant dies, in that scenario the return of purchase price is paid to the nominee, that is 25 lakhs in this example. Okay, then there is a new announcement which was made on 16th July for IPRU Saral pension. So they have revised the rate, okay, for joint life. So earlier rates were 6.41% of the amount invested, that was 1,60,204. Okay, but now the rate has been increased to 6.71%, that is 30 basic points they have increased the return. So now the person will receive 1,67,781 as annual annuity. So we have taken this rate for a example of 60 years old person and on the investment of 25 lakh rupees. Okay, so what are the boundary conditions or eligibility criteria for IPRU Saral pension? So minimum annuity amount should be 12,000 rupees per annum. Okay, minimum purchase price corresponding to annuity of rupees 1,000 rupees per month. Maximum purchase price, so there is no limit. So anybody has said 1 crore or 10 crore or any amount higher than that, he can invest in this IPRU Saral pension. Okay, premium paying term, as we told you, this is an immediate annuity plan. Okay, so premium will be only one, that is single premium. Minimum entry age, yes, 40 years, and maximum entry age is 80 years. Okay, so आज की दुनिया में there are many young people who are saying they want to retire at 40 या 45. Okay, so such kind of people can invest in this plan. They can enter into these policies. Okay, in case of joint life annuity, age restriction applies to both life. यानी both the members should be within this age group for joint life annuity. Coming towards next plan, that is Bajaj Allianz Guaranteed Pension Goal. Okay, so we will discuss the key features of this plan. So in immediate annuity option, okay, so there are total 5 type of options you can select from. Okay, so the first choice is life annuity with return of purchase price. As I told you in earlier example, okay, यहाँ पर client को एक बार premium pay करना है, he will start receiving annuities from next year onwards. Okay, and on his death, his nominee will get a return of purchase price. Second option is life annuity. So in this particular option, there is no return of purchase price. So since insurer is not giving any return of purchase price, the annuity amount will be slightly higher as compared to first option. Third option is annuity certain for 5 years or 10 years or 15 years और 20 years and thereafter. ओके, सो यहाँ पर आपको एक चॉइस मिलती है कि लेटस से आपको 10 साल तक ज़्यादा एन्यूटी चाहिए तो आपको ज़्यादा एन्यूटी मिलेगा एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दैट ड्यूरेशन आपको नॉर्मल रेट से एन्यूटी मिलती रहेगी. ओके, फोर्थ ऑप्शन इज लाइफ एन्यूटी विद रिटर्न ऑफ परचेस प्राइस ऑन डेथ और सर्वाइवल टिल एज 85. ओके, सो 85 तक अगर डेथ हो जाती है तो आपको रिटर्न ऑफ परचेस प्राइस मिलेगा. Okay, whichever is later. Fifth option is life annuity with return of purchase price or annual installments of 5% on survival till 70 or end of 15 years, whichever is later. Okay, तो यहाँ पर डेथ होने के बाद 5% एक्स्ट्रा आपको मिलेगा एज एन सर्वाइवल बेनिफिट. सो हाउ डज दिस प्लान वर्क्स? सो यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया 50 lakhs का इन्वेस्टमेंट है पर पॉलिसी होल्डर की एज 60 है. Okay, so every year he will start getting
4,500,000 पर एनम। ओके, एंड अगर डेथ हो जाती है तो एन्युटी उसका बंद हो जाएगा। ओके, सो इस एग्जांपल में एक चीज तो है कि अगर जल्दी डेथ हो जाएगी तो यस, थोड़ा लॉस रहेगा क्लाइंट को। ओके, लाइफ एन्युटी में। तो इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो हम देखते हैं। सो इमीडिएट एन्युटी, मिनिमम एंट्री एज यहाँ पर 30 ईयर्स है। आईप्रो सरल पेंशन में हमने देखा इट वाज 40 ईयर्स, सो ईयर द मिनिमम एंट्री इज 30 ईयर्स एंड मैक्सिमम एंट्री एज इज 85 ईयर्स। ओके, सो बोथ जॉइंट में भी अगर लेना है, सो दिस बोथ द होल्डर्स शुड फॉल इन दिस एज ग्रुप। एन्युटी अमाउंट ईयरली बेसिस पे अगर हम देखें तो मिनिमम एन्युटी शुड बी 12,000 रुपीज पर एनम। मैक्सिमम का कोई यहाँ पर लिमिट नहीं है। परचेस प्राइस दैट इज द प्रीमियम, सिंगल प्रीमियम हमें जो भरना है, ओके, वहां पर भी किसी भी प्रकार का कैपिंग नहीं है। ओके, एज पर IRDA guidelines, is POSPs are allowed to sell only immediate annuities. Okay, life annuity with return of purchase price on death and only individual plan. ओके, तो जॉइंट लाइफ वाला जो ऑप्शन है हम बजाज वाले प्लान में नहीं दे पाएंगे। ओके, नाउ कमिंग टुवर्ड्स इंक्रीज्ड IRR इन गारंटीड प्लान्स। ओके, सो हम नॉन पार्टिसिपेटिंग प्लान्स जो बेच रहे हैं, ओके, तो उसमें भी अभी IRR की बढ़ोतरी हो चुकी है लास्ट मंथ में। सो फ्रेश एग्जांपल जो मैं देना चाहूंगा दैट इज ऑफ संचय प्लस। सो संचय प्लस का जो IRR आज की डेट में जा रहा है फॉर लॉन्ग टर्म इनकम दैट इज 6.84। सो ये एग्जांपल जो है जहां पर मैं 12 ईयर्स तक पे करूंगा, 10 ईयर्स तक पॉलिसी पे करूंगा, 12 ईयर्स तक का पॉलिसी टर्म होगा एंड 30 ईयर्स का मैं पे आउट लूंगा, तो उस सिचुएशन में मेरा IRR जो जाता है इट गोज अप टू 6.84%। सो जब ये प्लान लॉन्च हुआ था 3 ईयर्स, 3 साल पहले जब ये प्लान लॉन्च हुआ था, उससे ज्यादा IRR आज की डेट में संचय प्लस हमें दे रहा है। ओके, नाउ कमिंग टुवर्ड्स IT अपडेट्स। सो HO में जो IT के अपडेट्स है उसके बारे में हम अभी आपको बताना चाहेंगे। ओके, तो सबसे पहला है HDFC अर्गो। सो HDFC अर्गो में जो प्लान है माई हेल्थ सुरक्षा, so with effect from 10th of August there is a revision in premium rates of my health suraksha plan. Okay, new premium pricing is as per the zone structure. Okay, so आपके सामने स्क्रीन पर 3 जोन यहाँ पर दिख रहा है, दैट इज 1A टायर, टायर 1B एंड टायर 2। नाउ पुणे हैज बीन मूव टू टायर 2 जो अर्लियर टायर A1 में था। ओके, सो द प्रीमियम्स विल बी स्लाइटली लोअर फॉर पुणे इन्वेस्टर्स। सम अदर चेंजेस इन माई हेल्थ सुरक्षा। सो रिबाउंड का जो बेनिफिट था, ओके, सो योर रिबाउंड कवरेज दैट ऑफर्स एडिशन ऑफ अमाउंट इक्विवेलेंट टू क्लेम, ओके, ये अभी आप एड ऑन के तौर पर ले सकते हो एज एन अनलिमिटेड रिस्टोर। ओके, ये प्लान में फीचर ऐसा था कि जितना आप क्लेम करोगे उतना ही रिस्टोरेशन आपके पॉलिसी में मिलता था। ओके, बट नाउ दे हैव लॉन्च्ड अनलिमिटेड रिस्टोर एड ऑन, जिसके लिए एक थोड़ा सा ज़्यादा प्रीमियम आपको पे करना पड़ेगा, बट आप मल्टीपल रिस्टोरेशन का बेनिफिट यहाँ पर ले सकते हैं। सो आपके क्लाइंट्स का जब भी रिन्यूअल होगा फॉर दिस प्लान एज वेल एज आप किसी क्लाइंट को नया प्लान ये दे रहे हो, तो प्लीज़ इंश्योर कि आप उन्हें अनलिमिटेड रिस्टोर का एड ऑन यहाँ पर आप दे दीजिए। ओके, सो यस, जहाँ पर 5 लाख के अगेन रिस्टोरेशन में हम 10 लाख तक का बेनिफिट लेने की अपने पास ऑप्शन था। सो इस एड ऑन देने के बाद यस, हम थोड़ा ज़्यादा क्लेम का बेनिफिट क्लाइंट्स को दे पाएंगे। ओके, अनदर इज लॉन्ग टर्म पॉलिसी डिस्काउंट। ओके, ये जो लॉन्ग टर्म पॉलिसी डिस्काउंट्स में अभी परसेंटेजेस बढ़ चुके हैं। ओके, आप 2 साल का प्रीमियम अगर आप पे कर रहे हो तो आपको 7.5% डिस्काउंट मिलेगा, एंड अगर आप 3 साल का प्रीमियम एक साथ पे कर रहे हो तो आपको ओवरऑल प्रीमियम पे 10% का डिस्काउंट मिलेगा। Okay, for providing abundant clarity, we would like to inform you that the new baby is being covered from 91st day after birth. So, पॉलिसी पीरियड के दौरान किसी पॉलिसी होल्डर को अगर बच्चा हो जाता है, सो ही कैन बी इंक्लूडेड, ही और शी कैन बी इंक्लूडेड इन दिस पॉलिसी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 90 डेज। ओके, सो बैलेंस पीरियड के लिए प्रोरेटा बेसिस पे आपसे प्रीमियम चार्ज किया जाएगा फॉर दिस न्यूबॉर्न बेबी।
Okay, important note, unlimited restore is available with जो add on cover है, currently it is not available on our POSP desk. Okay, so ये benefit आपको अगर किसी को देना है तो हमने आपके लिए प्रोविजन रखा हुआ है, आप इसको ऑफलाइन मोड में डाल सकते हैं. Okay, and we are working on to include this into our integration also. So as soon as this integration gets completed, we will inform you. Okay, तो जस्ट वेट कीजिए, कुछ ही दिनों में ये इंटीग्रेशन में हो जाएगा और उसको हम अपने POSP डेस्क पर भी लाइव करेंगे. Second update is on Tata AIG health insurance plans. So with effect from 23rd of August, following some insureds will be restricted, okay, on our online journey. Okay, so 5 लाख के नीचे के जो सम इंश्योर्ड्स थे वो भी ऑनलाइन यूटिलिटी में अवेलेबल नहीं होंगे. ओके, सो अभी POSP डेस्क पे सिर्फ 5 लाख का जो ऑप्शन है वही अवेलेबल होगा. ओके, एप्लीकेबल एंड दिस पर्टिकुलर अपडेट इज एप्लीकेबल ऑन ऑल दी टाटा AIG मेडिकेयर प्लान्स. तो जितने भी उसके वेरिएंट्स हैं सभी में 5 लाख के नीचे के वेरिएंट अभी अवेलेबल नहीं होंगे, सिर्फ 5 लाख वहाँ पर आपके लिए अवेलेबल होंगे. ओके, कुछ और चेंजेस है आईटी में. सो चेंजेस इन रिन्यूअल रिपोर्ट. ओके, वी हैव मेड फ्यू चेंजेस इन रिन्यूअल रिपोर्ट ऑन योर डेस्क. ओके, उसकी लिस्ट हम वन बाय वन देखेंगे. सो वी हैव एडेड ECS एंड नॉन ECS मोड कॉलम. ओके, सो लाइफ इंश्योरेंस में कई बार ऐसा होता था कि हमने नैश मैंडेट्स या ECS मैंडेट्स दिए हुए हैं बट हमारे सिस्टम पर वो नज़र नहीं आता था. एंड कई बार हमें ये भी नहीं पता चल जाता कि इसके लिए रिमाइंडर का कॉल करूँ या इससे चेक मुझे लेना है रिन्यूअल का. ओके, तो हमने यहाँ पर ECS नॉन ECS का ऑप्शन यहाँ पे दिया है. ओके, सो जिस किसी का भी नॉन ECS मोड पे है तो आप उनको रिन्यूअल के लिंक्स या उनसे चेक कलेक्ट करके लोकल ब्रांचेस में सबमिट कर सकते हैं. ओके, नाउ अर्लियर इसमें ग्रुप टर्म लाइफ की जो पॉलिसीज थी उसका रिन्यूअल नहीं दिखता था बट ग्रुप टर्म लाइफ भी अभी आपको रिन्यूअल रिपोर्ट में दिखेंगे. वी विल डिस्प्ले रिन्यूअल नोटिस रिमार्क इफ रिन्यूअल नोटिस इज नॉट अपलोडेड. ओके, तो कई बार ऐसा हो जाता है कि रिन्यूअल नोटिस वक्त पे हमारे पास नहीं आती तो इट इज नॉट अपलोडेड ऑन दी रिन्यूअल रिपोर्ट्स. ओके, तो उस केस में हम आपको रिमार्क दे देंगे. ओके, कि रिन्यूअल नोटिस इज नॉट अवेलेबल, जो भी स्टेटस वहाँ पर होगा हम वहाँ पर अपडेट करेंगे. We have started displaying renewed paid installments of not enforced life insurance cases. So earlier renewal report में लाइफ इंश्योरेंस की प्री पॉलिसीज अगर लैप्स हो चुकी है ओके तो वहाँ पर स्टेटस नहीं हुआ करता था. सो नाउ वहाँ पर स्टेटस अपडेट आएगा that it is not enforced. So accordingly you can have discussion with your client to revive this policy. Okay, previously इस सिस्टम में सिर्फ enforced cases ही दिखते थे. Okay. We have also added current policy status column enforce not enforce. Okay. So कोई पॉलिसी अगर लैप्स हो चुकी है लेट अस से 15 अगस्त का अगर ड्यू डेट था तो 16 को वहाँ पर स्टेटस आएगा इट इज इन नॉट इन्फोर्स. ओके, तो ये स्टेटस भी हमने वहाँ पर अपडेट रेगुलर बेसिस पे करते रहेंगे. ओके, आई होप आप लोगों ने हमारा नया वेबसाइट देखा होगा njinsure.in. सो वी हैव चेंज इट्स लुक एंड फील. सो करंटली जो njinsure.in का जो होम पेज है वो कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगा. ओके, आपको लॉगिन में जाके यू कैन लॉग इन टू योर POSP डेस्क. ओके, एंड आपको प्रोडक्ट रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पर नीचे वाले पेज पर सारे कंपैरिजंस करने हैं या आपको ब्रोशर्स चाहिए या आपको हॉस्पिटल्स की नेटवर्क लिस्ट चाहिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपके लिए हमने अवेलेबल करके रखी है. Okay. This is few samples of our new website. Okay, we have also shared this image with you. Okay, हर घर हेल्थ इंश्योरेंस. ओके, तो एक कॉन्टेस्ट भी हमने इसमें लॉन्च किया हुआ है. ओके, इंश्योर योर हेल्थ टू सिक्योर योर वेल्थ. ओके, तो इस कॉन्टेस्ट में हमने नंबर ऑफ लॉगिन्स के हिसाब से सर्टिफिकेशन का क्राइटेरिया रखा है. एंड आई ये कहना चाहूँगा सारे POSPs जो यहाँ पर उपस्थित है कि आप इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कीजिए. ओके, बिकॉज ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव हमने लिया हुआ है कि आज़ादी को 75 साल हो गए. ओके, एंड हमारा एज एन फाइनेंशियल एडवाइज़र
एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपने जितने भी क्लाइंट्स हैं अपने अड़ोस पड़ोस में सबको एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी एज वेल एज एक टर्म प्लान हम अपने क्लाइंट्स को दे दें। ओके, सो ये क्लाइंट डेस्क हमने जो न्यूली लॉन्च किया हुआ है फ्यू मंथ्स बैक, ओके, तो उसका डेमो लिंक यहाँ पर आपके लिए हमने दिया हुआ है। ओके, ये लिंक्स आपके डिजिटल गैलरी में भी आपके पास अवेलेबल है फॉर द डेमो ऑफ न्यू क्लाइंट डेस्क। तो सभी से यही रिक्वेस्ट होगा कि आपके क्लाइंट्स का, आपने जब भी क्लाइंट रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, जितने भी क्लाइंट्स का रजिस्ट्रेशन किया हुआ है उन सबको आप फ़ोन के ज़रिए या पर्सनली मिलके या वेब मीट के ज़रिए उनको क्लाइंट डेज उनका एक्टिव करके दे दीजिए। ओके, सो दैट दे विल बी एबल टू व्यू ऑल देयर पॉलिसीज। ओके, प्रपोजल फॉर्म्स, पॉलिसी कॉपीज, प्रीमियम सर्टिफिकेट्स, ये सारी चीज़ें जो है उनको हैंडी हो जाएंगी। ओके, सो दे कैन डू दिस देमसेल्फ। ओके, सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आपके जितने भी क्लाइंट्स हैं इंश्योरेंस के, उनको आप इस क्लाइंट डेस्क को एक्टिव करने के लिए कनेक्ट कीजिए उनके साथ। ओके, कमिंग is Saturday, that is on 20th of August. Okay, we have kept a digital Saturday school that is a client meet. Okay, and we will be having a discussion of lifelong pension for you and your spouse. So pension plans के ऊपर या annuity plans के ऊपर हमने एक सेशन रखा हुआ है जहाँ पर आईप्रू से मिस्टर अजीत कुरुप एज वेल एज प्रतीक शूटिंग जो है ये आपके क्लाइंट्स को एड्रेस करेंगे एज पर एज पेंशन प्लान्स या एन्यूटी प्लान्स आर कंसर्न। ओके, आई होप आप सभी को ये इमेजेस मेल पर आई हुई है जिसमें क्लाइंट रजिस्ट्रेशन की लिंक्स भी है। सो आप प्लीज़ आपके क्लाइंट्स को ये लिंक भेजिए एंड आस्क देम टू रजिस्टर फॉर दिस इवेंट। ओके, एंड रजिस्ट्रेशन के बाद सभी से रिक्वेस्ट भी होगा कि 20th को, दैट इज बिफोर दिस सेशन स्टार्ट, आप सभी क्लाइंट्स को वापस एक बार फॉलो अप करके उन्हें इस मीटिंग में अटेंड करने के लिए या लॉग इन करने के लिए भी इन्फॉर्म कीजिए। ओके, दिस सेशन विल बी अ वेरी गुड इंफॉर्मेटिव सेशन फॉर दोज क्लाइंट्स। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। सो वी विल ओपन अप फॉर Q&A। ओके, सो हुसैनी सर। Yeah, I think thank you very much, Manoj. I think one thing which I would like to tell all our POSPs is that when you go and talk to your clients about annuities, first of all, let's be open-minded and talk to all the clients who are above that 50 age bracket, 50 to 60 age bracket, or more, even more than 60 age bracket. So I think it's a very good target area to work upon. Number one. Number two is whenever you are selling annuities, so it is advisable that you sell uh, annuity with return of purchase price option. Though it is optional, but when you do that, I think it gives an additional comfort to your client that if something happens to him, supposedly that client buys it at 60 and something happens to him at the age of 62 or 63, so at least his nominees are going to get that money uh, you know before time. So that is one. And जितने भी ज़्यादा हम एन्युटीज अगर आप जहाँ भी सेल कर रहे हैं wherever possible, sell it on a joint life basis, because that is where the life of the client is also secured and his or her spouse is also secured. So I think जो मनोज ने भी कहा कि your role as a financial advisor, so I think that is in the direction of giving right advice to your client, right? So, Manoj, there are certain questions. If can anyone else be a joint life holder along apart from wife, सी सर यहाँ पे हस्बैंड एंड वाइफ right? ये दो ही हो सकते हैं, देर इज दो ही नो हो थर्ड सकते हैं, इसके रिलेशनशिप अलावा कोई और हम नहीं ले बच्चे या सकते। कोई और नहीं हो सकता वहाँ पे. नहीं नहीं। Great. Okay. Any thoughts or ideas as to how an NPS person who is registered in NPS he can buy an annuity, Manoj? सर उसके लिए प्रोसेस है। ओके, इंश्योरेंस कंपनी को आई विल गिव द प्रपोजल, ओके, along with the NPS details. Okay, I will have to mention my NPS account number
एंड दी कॉर्पस अवेलेबल ओवर देयर, वो स्टेटमेंट भी हमें देना पड़ेगा इंश्योरेंस कंपनी को, एंड इंश्योरेंस कंपनी विल ट्रिगर दी पेमेंट रिक्वेस्ट टू दैट पर्टिकुलर एनपीएस. सो जो भी एनपीएस प्रोवाइडर है, वेदर इट इज एचडीएफसी है या एसबीआई है, तो उस पर्टिकुलर एनपीएस सर्विस प्रोवाइडर को insurance company will send the request for this money transfer. So once NPS transfers this money, okay, तो उनका पॉलिसी इशू हो जाएगा. And that is a pretty quick process. हाँ, एनसी इंश्योरेंस की एंड इंश्योरर की एंड से तो क्विकली हो जाता है, बट Right. एनपीएस से टाइमली रिवर्ट अगर आ गया, ओके, देन क्विकली हो सकता है. Okay. Okay. Also, Manoj, can you give some idea with respect to taxation and does GST have an impact on annuities? यस, बीइंग अ इन्वेस्टमेंट प्लान, यहाँ पर 4.25% जीएसटी एप्लीकेबल होगा. Okay. तो ओके, मुझे एंड जो 20 भी लाख रुपए अगर इन्वेस्ट करना है तो मुझे 20,90,000 या 20,85,000 समथिंग लाइक दैट आई हैव टू पे. यस, करेक्ट सर, करेक्ट सर. एंड ये जो ओके. प्रीमियम आप इन्वेस्ट करते हो, तो उसके ऊपर एटीसी का बेनिफिट क्लाइंट कैन टेक. ओके, एंड जो एन्युटीज है, बीइंग एन्युटी प्लान, सो एन्युटी जो भी आएगी तो वो तो टैक्सेबल होगी. ओके, बट Right. So टैक्सेबल कब तक there होगी? is no benefit of Section या, 1010D in annuities. That is यस, something which is यस, very इट इज important. नॉट देयर. या, Right. But just to add to that, भले ही उसमें 1010D का बेनिफिट नहीं है, बट जो भी लोग 60 के ऊपर के हैं, उसका बेसिकली इनकम लेवल भी टैक्स के लेवल को ब्रीच नहीं करता है, right? And they enjoy certain better privileges on the taxation side. So the taxation cost, I don't think is going to be such a big deterrent to the investor. उसके सामने अगर मैं कंपेयर करता हूँ एफडी से या दूसरे किसी भी चीज से, तो वहां पे तो फ्लैट टैक्सेशन लग जाता है इन्वेस्टर को. यहाँ पे that taxation is comparatively on the lower side. And another thing which is very important and to understand is that in FDs my interest rates can go up and down. But if I bought an annuity, I've got that assurity for next 30-40 years. That interest rate अभी ऊपर गया कि नीचे गया, मुझे इतना इनकम तो अभी जिंदगी भर आने वाला है, right? राइट, Correct me if I'm wrong, Manoj, on that. करेक्ट, करेक्ट है सर. Yeah. Uh, any other questions which I'm missing out, Manoj, which you can see? जस्ट अ मिनट सर. एक क्वेश्चन आपके लिए है सर. बोलिए. विच इज बेटर, एनपीएस और एसडब्ल्यू? एनपीएस और एन्युटी और एसडब्ल्यूपी? यस, एन्युटी और एसडब्ल्यूपी, व्हाट इज बेटर? एनपीएस और एसडब्ल्यूपी यहाँ पर स्पेसिफिकली मेंशन्ड है, एनपीएस और एसडब्ल्यूपी. आई थिंक सो आई एनपीएस थिंक, और एसडब्ल्यूपी, ये अपने दोनों जो सब्जेक्ट है वो आज के अपने टॉपिक से चैप्टर के बाहर, अरे है. सिलेबस के बाहर है. सो आई थिंक लेट्स टेक इट ऑफ हैंड rather than taking it in this particular forum, because both are investment products and we are addressing something related to insurance. So if I have to talk about annuity and SWP, I think if somebody is investing in SWP, obviously you can fix the amount of money which you are going to get, but there is going to be always volatility in the market, right? Currently, many investors have seen markets going up in the one direction only. So many investors feel that markets are always going to rise, but that is not the case. When markets stagnate or they don't perform, right? If I give you an example of year 2000 to 2003 or 2010 to 2014, so markets can stagnate for a pretty long periods of time, and at that point of time, the investor might be eating into his capital, and rather than eating into his capital, I think the mental pressure which the investor might go through, that I am losing on my capital has gone down. I think that is, I think, pretty high, and especially for people who are in the retired age bracket, उन लोगों को ये सब चीज का टेंशन ज्यादा हो जाता है. सो आई थिंक इक्विटी में लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली ज्यादा रिटर्न बनते हैं लोगों के, राइट? और एसडब्ल्यूपी भी लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस 5 साल 10 साल का देखेंगे तो शायद रिटर्न अच्छा बनेगा, बट वो जो लॉन्ग टर्म का रास्ता है वो थोड़ा रास्ता स्ट्रेट लाइन नहीं है, वो काफी वॉलेटाइल है. सो मेनी पीपल माइट नॉट बी हैप्पी विद दैट volatility, or they might not be very comfortable with that volatility. On the other hand, if you are giving an annuity,
So there is absolutely कोई मार्केट से, यूक्रेन से, रशिया से, इन्फ्लेशन से, ऑयल प्राइस से, किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है. अगर मेरा पैसा फिक्स है कि मुझे 50,203 रुपए आने वाले हैं हर महीने, मैंने मंथली एन्युटी लिया है, तो कम वॉट में दैट मनी इज गोइंग टू कम टू मी. So I think that is how both the products are different. Both are having their own pluses and minuses. But I think people who cannot bear volatility, and there are a large number of people who cannot bear volatility in their portfolios, so annuity is an ideal product for them. Okay. Yes, there is one question related to Tata Saral Pension. Okay, so Tata AI का जो सरल पेंशन पॉस वेरिएंट है, you can sell it. There is no issues with it. Okay, sir, there is one question related to Star Health. Okay, Star Health is not available on our desk. तो मैं सभी को ये कहना चाहूँगा कि Star के पास Star is having only one plan which is POSP qualified, that is of Family Health Optima. Okay, and in that particular plan minimum 2 members का होना मैंडेटरी है. ओके, सो अगर आप इंडिविजुअल बेसिस पे किसी का कोड निकाल रहे होंगे तो स्टार का फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा का कोड वहाँ पर नहीं आएगा. ओके, तो स्टार डजंट हैव अदर प्रोडक्ट्स रजिस्टर्ड फॉर पीओएसपी अनलाइक अदर इंश्योरेंस जैसे एचडीएफसी हो गया या केयर हो गया. तो स्टार इज हैविंग ओनली वन प्रोडक्ट इन पीओएसपी. सो दैट्स व्हाई इन मेनी सिनेरियोज you won't find codes from Star. Right. Okay, so I would request all our POSPs to please get in touch with our sales team, our unit managers, our CMIs. They'll guide you better in terms of these particular products. Right? We can also arrange small sessions for all of you for understanding these products in a better way. और एक बार आपसे मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि दैट प्लीज लिस्ट डाउन योर इन्वेस्टर्स हु आर पोटेंशियल 50 to 65 age bracket, right? And as Manoj said, this Saturday we are having some very good speakers who are going to talk about post-retirement pensions and annuities only. So I think you can reach out to them and you can invite them to come to that session. And जितने लोग आएंगे उससे आपका काम भी और आसान हो जाता है. And please feel free to reach out to our team. We'll be happy to assist you. We'll be happy to come for calls, because I think it's a very simple product to talk to, and it's a big need gap which we are fulfilling. And ऐसा नहीं है कि कोई इन्वेस्टर हमें ढूंढने जाना है. हमारे सबके पास में बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं ऑलरेडी, जिनको ही अगर हम लोग वापस से एक बार देखेंगे तो शायद हमारे आसपास में ही हमें 5-10 इन्वेस्टर्स आसानी से मिल जाएंगे, जहां से हम उन्हें प्रोडक्ट भी दे सकते हैं, एंड वी कैन ऐड टू pretty decent income through this particular product. Right, Manoj? Yes, sir. So we can, I think, conclude the session. I think we have more or less done with the question. Yes, sir. Right. Thank you very much, and I look forward to a very encouraging response from all of you. This is a very, very interesting product, and we'll be happy to educate you and work together on reaching out to large number of clients and getting their annuity started with us. Thank you very much for joining us, and we'll be in touch. Thank you. Have a nice day. Thank you everybody. Have a nice evening.